कोडजे कंपनी करने वाले। दिस इज अ एयरलाइन इंडस्ट्री कंपनी। इसका टास्क वन अभी अपन चालू करने वाले हैं। कोडजे's chief executive officer recently gave an interview to a leading Corland business magazine. The CPO, Chief People Officer, is about to chair a staff representative committee meeting, and thinks it would be useful to communicate some of the key points of the CEO's interview to staff at this meeting. She has asked you to help in preparing for this meeting. Prepare briefing notes for the CPO, which outline the problems in culture caused by previous leadership style and the impact that the current CEO's leadership style has had on Kodze culture. Hmm. ठीक है, ये रहा इंटरव्यू वो। Corland Business Review, August 2013. Airline Focus. Interview with Magda Fisk, CEO CEO of Corjetz. Taking over from Eric Madsen as CEO of Corjetz was never going to be easy for Magda Fisk. Although the brothers had built strong foundations for the success of Corjetz, their entrepreneurial spirit and drive could not maintain their early success in customer and staff satisfaction. Customer complaints and staff turnover were at the highest level 10 years ago. Since joining, Magda has led Kodze through a successful stock market listing, and consumer satisfaction ratings hit their highest level in 2012. Customer turnovers were at the highest levels 10 years ago. Customer complaints and staff from the highest 10 years ago. Since joining, Magda has led successful stock market listing, and customer satisfaction ratings hit their highest level in 2012. So, okay, nice. What were your priorities when you took on the role of CEO? 10 years ago, Kodze was hierarchical, and there was no connection between senior leaders and staff. Okay, I wanted staff to have autonomy to make decisions for areas which for areas which were experts in particular, which they were experts in, particularly in customer relationship management. We weren't making adequate use of the knowledge and talent that existed in the business, nor were we focusing on attracting and retaining high quality staff. Our customer service approach had failed to change with the rapidly evolving external environment. So we had to trust staff to lend us on how to manage customer relationships. What were the problems you had to overcome, and how did you address them? Leadership was centralized, and there was a focus on punishment rather than reward. Oh, we were losing talented staff who felt that their voices were not being heard and were afraid to make mistakes. I introduced monthly Meet the Board online chats where board members have host an interactive chat on the Kodze intranet site to highlight key initiatives in the business. This was designed to encourage communication and motivation. Nice. We have set up staff represent. तो इससे इतना तो पता चल रहा है कि जो previous बंदा था मेडिसन जो भी था, that guy was a autocratic leader, whereas she is more of a democratic leader. ऑटोक्रेटिक लीडर बेसिकली बात नहीं करने देता, एंड जो डेमोक्रेटिक लीडर्स होते हैं वो बेसिकली कम एम्प्लॉयज का सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसा रहता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वेर कॉन्स्टेंटली रीडिजाइन टू एंश्योर स्टाफ हैव द लेटेस्ट स्किल्स। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वेर आर कॉन्स्टेंटली रीडिजाइंड। ठीक है, तो एटलीस्ट ये मतलब ये बोरिंग नहीं होते ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। टू एंश्योर स्टाफ हैव लेटेस्ट स्किल्स, आई बिलीव दैट empowered and engaged staff are driver of consumer service, are driver of customer service. I am proud that as an organization we encourage open and honest dialogue between staff and leaders. Kodze has a dynamic culture which embraces challenge, sorry,
sorry, which embraces change and innovation. We even ask our cabin crew to redesign their own uniforms every 4 years. We hold a competition, and the most popular design is selected and professionally created. It's very popular with staff and fiercely competitive. Why is the board so important to Kodze? Our non-executive directors play a vital role in the strategic success of the business, and diversity of the members is critical in such a dynamic business environment. We are fully focused on ensuring our NEDs are fully independent to provide shareholders with the reassurance that our corporate governance is sound and robust. Diversity also extends to our executive board members, all of whom came from a wide range of backgrounds and have a depth of experience. I am also proud to be one of the growing number of female CEOs in Corland, and I will continue to promote diversity in Code's leadership. ठीक है. Problems in culture caused by previous leadership style. Impact of the current CEO leadership had on College's culture. College का culture better हो गया है. Employees are now more free to speak. Employees are more confident and motivated to work. They are not afraid of speaking their own ideas because of the monthly board meet which has been kept by the CEO. This has helped the employees to. This will obviously have a great effect on the staff retention, and the staff turnover will go down, because of which our competitors will not be able to attract or gain our staff. The staff that will have the experience at our company will stay in our company itself and work for the betterment of our company. ठीक है, इतना ठीक है, ज्यादा our company हो गया वो ना, वरना however, what the employee should also know that a democratic leader cannot always for a particular type of leader cannot follow a particular style of leadership all the time. That means the most democratic of all the leaders have to also sometimes be autocratic, and the auto and vice versa. ठीक है, आई थिंक इतने सब तो बोल दिए मैंने. और क्या बोल सकते हैं सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट लिस्टिंग, वो ठीक है. हम्म, देखो मैं तो इतना ही मतलब आंसर फिलहाल के लिए लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो डाइवर्सिटी और ये सब के जो पॉइंट्स है ये सब तो इन तो नीचे आएंगे, तो इधर कुछ आ नहीं सकता, है ना. एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू वर्क एज देयर ग्रोथ. ये तो उनके यूनिफॉर्म्स चेंज हो रहे हैं. आई डोंट नो, मतलब ये अच्छी बात तो है, अच्छा तो है, सही है, आई थिंक सही है, नॉट बैड. एम्प्लॉयज के ऊपर इन्होंने ज्यादा फोकस किया हुआ है ऑब्वियसली. एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इससे एक्चुअली हमारा जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हो गया, बिकॉज वी हैव गिवन मोर ऑटोनॉमी टू द एम्प्लॉयज, सो देयरफॉर कस्टमर्स विल बी मोर एंगेज टुवर्ड्स अस बिकॉज ऑफ ऐसा ये अपन बोल देंगे, ठीक है ना. दिस दिस कैन क्लियरली बी रिफ्लेक्टेड अपॉन द इंक्रीजिंग रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स ऑफ द ऑफ ये कंपनी, है ना, कोडजे कंपनी. ठीक है, मैं अभी इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ. कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स में तो मैं देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं उसके बारे में. ठीक है, तो मैंने ये आंसर अभी के लिए लिखा हुआ है. ठीक है, तो अभी मैं कोई भी आंसर चेक नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज दिस इज द पेपर जो मैं पेपर की तरह देने वाला हूँ, लाइक ऐसा पेपर के जैसे इवेल्युएशन करने वाला हूँ, राइट. सो फॉर नाउ लेट्स नॉट चेक दिस आंसर. मैं अभी आगे बढ़ता हूँ टास्क 1 के बी पार्ट के ऊपर. सीपीयू, अच्छा हाँ, ये तो स्लाइड्स बनाने मेरे को. इसका काम ही नहीं है. CPU believes that many of Code's staff are unaware of the role and importance of NEDs. She has asked for your help in preparing a presentation for her meeting with the staff representative committee.
Prepare two presentation slides and accompanying notes for the CPO's meeting with the staff representative committee. Explain key roles of Corjetz NEDs. तो बताना है हमको. Assess the importance of Corjetz of having a diverse board. ऐसे तो एक में हमें डाइवर्सिटी के बारे में बेनिफिट्स बताने हैं, और तीसरे में और दूसरे में हमें उसके की रोल्स बताने हैं एनईडीज के. तो एनईडीज के की रोल क्या क्या हो सकते हैं सर? सबसे पहली बात तो इसको ना ऐसे है ना, इसको ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना. एनईडीज, की रोल ऑफ Corjetz एनईडीज एंड इम्पोर्टेंस हैविंग अ डाइवर्स बोर्ड. एनईडीज क्यों होने चाहिए? सबसे पहली बात तो बोर्ड पे एनईडीज क्यों होने चाहिए एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट ऑन दिस बोर्ड. तो सबसे पहली बात तो लिंक बिटवीन एम्प्लॉयज एंड बोर्ड, reducing the power in the hands of the EDs, reassurance to shareholders. और क्या हो सकता है? Reassurance to shareholders. NEDs are not involved in the day-to-day operations. एक्सटर्नल व्यू हम लोग बोल सकते हैं. तो ये चार पॉइंट्स अपन ने फिलहाल के लिए लिखे हैं यहाँ पे. और सेकंड में भी इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्ट, जब हैविंग अ डाइवर्सिफाइड बोर्ड का क्या हो सकता है? डिफरेंट ओपिनियंस एक ऑप्शन हो सकता है. डिफरेंट ओपिनियंस. डाइवर्सिफिकेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स थे एक्चुअली. स्प्लिट इन रोल्स में भी, इन रोल्स helps build companies reputation. तो ये तीन चीजें हैं जो फिलहाल मेरे माइंड में आ रही है. आई थिंक मैं इसके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा एलैबोरेट कर सकता हूँ. मैं इन्हीं सात चीज़ों के ऊपर ना बहुत ज़्यादा एलैबोरेट कर सकता हूँ. तो मैं ये अभी लिखना स्टार्ट कर देता हूँ. एंड देन देखता हूँ, अगर मेरे पास टाइम बच गया तो फिर अपन और फिफ्थ या फोर्थ पॉइंट दोनों में से किसी एक में लिखेंगे. और अगर कुछ क्लिक हो गया तो फिर लिखना ही है, ठीक है ना. चलो. तो जब मैं ये सम सॉल्व कर रहा था, मैंने एक चीज रियलाइज की कि मैंने एक हग्गार मचा दिया था. वो हग्गार ये था कि मैंने यहाँ पे कहीं पे तो जहाँ पे, हाँ, व्हेन आई वाज राइटिंग द एनईडीज का पॉइंट, तब मैंने इट इज अ लिंक बिटवीन द शेयर द एम्प्लॉयज एंड द वो लिख दिया था. बट ऐसा नहीं है, वो सीईओ का काम रहता है. दैट पर्सन इज द लिंक बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो मैं यहाँ पे तीन ही पॉइंट्स बेटर, यहाँ पे मेरे तीन ही पॉइंट्स बेटे. एंड आई थिंक दैट टुक अप अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी, जिसकी वजह से मैं इन सारे पॉइंट्स को एक्चुअली एलैबोरेट नहीं कर पाया. मैं बहुत ज़्यादा स्टकअप हो गया. एंड मैं मुझे लगता है ये मैंने आंसर बहुत कम लिखा है, जो मेरे पोटेंशियल से मैंने बहुत कम लिखा है. अच्छा एक्चुअली नहीं, मैंने यहाँ पे एक लिखा ना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. बट एक्चुअली मैंने, मुझे नहीं लगता है मैंने इसको अपने बेस्ट पोटेंशियल पे लिखा है. और मैं अभी चेक नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको चेक करने वाला हूँ जब मेरा पेपर फिनिश होगा पूरा का पूरा 100 मार्क्स का, तब हम सब कुछ साथ में एसेस करेंगे, ठीक? ओके. तो मैंने ये आंसर लिखा, और लिखने के बाद मेरे को बस एक चीज रियलाइज हुई कि देखो मैंने सारे ऑलमोस्ट ये कवर किए केपीआईज, पंचुअलिटी को छोड़ दिया बिकॉज मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा था. सो आई वाज लाइक कि सबसे पहले मैं CO2 वाला वो लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सही पॉइंट्स भी थे कॉपी पेस्ट करके करके वो लिखने के लिए. पंचुअलिटी के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं बचा. और जो बीच के जो ये स्टैटिस्टिक्स थे ना, ये तो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया. ये मैंने खाली एक एक्सप्लेन किया कि वो रेवेन्यू बढ़ गया है. बाकी ये सब मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया. कि मतलब मेरे को बहुत कुछ बोलना था बट मैं नहीं बोल पाया, क्योंकि नहीं था वक्त मेरे लिए. मैंने 6 मिनट कम लगाए थे. अगर मेरे पास अगर 6 मिनट ज्यादा होते,
शायद मैं पंचुअलिटी के बारे में नहीं लिखता पहले, मैं शायद सबसे पहले ये स्टैटिस्टिक्स के बारे में लिखता, उसके बाद मैं पंचुअलिटी पे आता। बट फिर भी ना, अगर मेरे पास 6 मिनट ज्यादा होते तो भी मैं उतने डेप्थ में और उस क्वालिटी का आंसर शायद नहीं लिख पाता जो इन्होंने लिखा रहेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इसलिए ठीक ही, मतलब मैंने ठीक लिखा है, ऐसा कोई मैंने सेक्सी आंसर नहीं लिखा कि वो बहुत ही क्रेजी आंसर लिख दिया। मैंने बस एक्सप्लेन किया है चीजों को थोड़े बहुत। दैट्स इट, दैट्स मैंने रेवेन्यू को फिर भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, रेवेन्यू कॉस्ट और सबको, लेकिन फिर बाद में ये जो नीचे कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये सब वो सब है, मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। बेसिक एक्सप्लेनेशन है मेरे खाली। आई एम लिटिल वो डिसअपॉइंटेड, बट ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। अभी वो टेबल 2 की कुछ तो बारी है, वो देखते हैं अभी, उसमें भी कुछ तो उन्होंने बोला था करने को। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। क्या है नीचे? The CFO is concerned that currently Corjetz does not have a clear structure for reporting its environmental and sustainability audit activities to its key stakeholders. Although it does produce an environmental and sustainability dashboard for internal use, he has proposed that Corjetz should present an environmental and sustainability audit report each year. Okay. He has provided you with a copy of the most recent dashboard too, and has asked for your assistance on this issue. Prepare briefing notes for the CFO, which outlines the content that Codex should report to its key stakeholders with an annual environmental sustainability audit report. सबसे पहले बात तो with an for annual environmental sustainability audit report, and a sustainability audit committee can be formed or can be hired in order to provide them with sustainability or auditing practices, and in order for them to have a body to scrutinize their activities. Now, when it comes to the table 2 part, we can see that there are sustainability principles, priorities, and measures given to us. However, there are no measures given to us. However, there is no measure of activity that has taken place. There are no figures in place regarding how much the pollution has gone down, how much our carbon footprint has gone down, etc. It is always important for a company to provide, you know, it's always important for any team to provide the sustainability. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट. It was important for the company to provide sustainability measures so that the shareholders have a wider perspective to look at a particular um, company. If company in future adopts integrated reporting, then sustainability reporting and environmental aspects become a key part of the company's yeah, reporting as a whole. Currently, we can see that there are four sustainability principles taken into account: climate responsibility, safety and security, customer and supplier relationships, and employee relationships. However, when it comes to um sustainability principles usually involve giving it back to the society, and therefore uh, these principles have been included. मेरे को क्या करना है अभी इसके अंदर? पता है, मेरे को ये लिखना है कि एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स एंड कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप वो सब नहीं आते। लाइक आई वांट टू राइट दिस शिट डाउन, बट मैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मेरे को ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। The concept of employee relationships and customer relationships should not have been included in the sustainability audit report. In fact, even the safety and security aspects come under a different guideline altogether. Sustainability principles should solely focus on the responsibility towards the
एनवायरमेंट एज अ होल, क्लाइमेट एंड ऐसा सब मैं लिख दूंगा. डज नॉट हैव टू नेसेसरीली इंक्लूड, ये सब हम लिख देंगे. और उसके बाद प्रायोरिटीज में कार्बन एमिशन रिडक्शन, वेस्टेज, ये सब ठीक है. एम्प्लॉयज ग्रीन वॉशिंग तो नहीं ना कर रहे हैं, वो सब भी देखना चाहिए. ग्रीन 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 वॉशिंग मतलब दूसरों को पैसे खिलाना, सो दैट हमारे कंपनी के बारे में एनवायरमेंटली वो लोग अच्छा बोले. फिर ये सब बोल देंगे, ये इंट्रोडक्शन होगा अपना कि कहीं कि करंटली 3% से ग्लोबल कार्बन एमिशन बढ़ता जा रहा है, वो सब अपन बोल देंगे. आई थिंक दिस इज ऑल वी कैन राइट फॉर दिस 8 मार्क्स आंसर, क्योंकि इतने में टाइम खत्म तो हो ही जाएगा, है ना. तो इससे ज्यादा तो मुझे लगता है मैं लिख भी पाऊंगा. ठीक है, सो आई विल स्टार्ट राइटिंग नाउ एंड देन वी विल सी, देन वी विल कंपेयर आवर आंसर विद देयर्स, क्योंकि दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ऐसा. तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. टास्क 2 के लिए क्या बोला उन्होंने. देखो मैं कौन, मैं सीनियर बिजनेस एनालिस्ट हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोर्ट की. ठीक है, मुझे टास्क 2 के लिए क्या क्या बोला गया है. द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO has asked you to assist him with two separate issues. Firstly, he has received an outline proposal from the chief commercial officer for investment in new artificial intelligence flight simulation technology to deliver pilot training. The CCO has the CCO is keen to gain support from the other board members to invest in this proposal as soon as possible, as he believes it to be critical in maintaining Corjet's competitive advantage. Okay. जो ये वाला क्वेश्चन 20 मार्क के लिए, नीचे वाला भी 20 मार्क के लिए होता है. हाँ, ये क्वेश्चन 20 मार्क के लिए. Prepare a report for the CFO which assesses the suitability, acceptability, and feasibility of the proposal to invest in AI flight simulation technology. Your answer should recommend with reasons whether it should be undertaken as soon as possible as suggested by the CCO. Professional marks are given for skepticism skills. Okay, मतलब इसमें मेरे को क्वेश्चंस पूछने हैं. हम्म. सुटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड फीजिबिलिटी. ठीक है, तो इनका भी ये वाला पढ़ लेते हैं, है ना. Investment in artificial intelligence flight simulation to deliver pilot training. The aim is to reduce human input and hours needed to train pilots and significantly reduce cost of obtaining maintaining pilot certifications. Okay. इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो करनी पड़ेगी भाई साहब, ओके, 500 मिलियन की करनी पड़ेगी. टाइम टेकन टू ट्रेन न्यू पायलट 12 मंथ्स, 8 मंथ्स. ठीक है. कॉस्ट पर पायलट इनकी इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ ऑल न्यू पायलट्स पहले 5 लाख थी, अभी 2,80,000 बनती है. कॉस्ट पर पायलट एनुअल अपडेट फॉर ऑल पायलट्स 45,000 and 20,000. Training cost each year for Corjetz pilots is currently over 140 million. Okay. तो ट्रेनिंग कॉस्ट करंटली 140 मिलियन का है. तो इट्स लाइक दैट कि एक मिनट, ट्रेनिंग कॉस्ट ना. हम्म. तो इट भी लाइक 5 लाख के लिए अगर 2,80,000 है, तो 140 मिलियन के लिए कितना होगा. तो ऐसा हम लोग को निकालना है. तो उतना हम लोग सेव करते जाएंगे. सो देखो वो एक्चुअली आधे से थोड़ा ज्यादा आएगा, शायद नहीं, हम लोग आधे से कम पैसे मतलब बचाएंगे. सो इट विल बी समथिंग अराउंड 65 मिलियन जो हम एनुअली बचाएंगे. ठीक है. की फीचर्स ऑफ AI सिमुलेशन बेस्ड पायलट ट्रेनिंग. यूज ऑफ AI फ्लाइट simulators to develop pilot in-flight skills, providing more realistic simulations. This reduces need for costly and time-consuming live in-flight training. The AI automatically collects training performance data about every aspect of individual pilot performance and behavior. The data gathered is used to continually update the AI simulation models. The data gathered is used to continually update the AI simulation models to improve the training scenarios. Instructors can use the intelligence gathered
टू क्विकली मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ट्रेनिंग एंड टेलर इट टू इंडिविजुअल नीड्स। फिर आता है पोटेंशियल इश्यूज। A human trainer is needed to give instructions and program the software. This is highly special. Okay, this is highly specialist job, and there is limited availability of instructors worldwide. ठीक है। Capability of replacing, तो एक्चुअली इसके अंदर उन्होंने, देखो, इस कॉस्ट के अंदर इन्होंने वो ट्रेनर का कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। पहले वो अपने को पूछना चाहिए कि वेदर इन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हैज देयर ऑलरेडी बीन कंसिडरेशन गिवन फॉर द ह्यूमन ट्रेनर विच इज नीडेड फॉर द इंस्ट्रक्शंस, और वो सब वो लिख देंगे। पता है केपेबिलिटी ऑफ रेप्लिकेटिंग डिसीजन मेकिंग इन ऑल सिनेरियोज इज अनसर्टन एज देयर आर so many variables to be considered when flight is commercially when flying is a variables to be considered when flying a commercial aircraft, right? कि मतलब कुछ कुछ चीजें शायद एआई कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि उन चीजों को रेप्लिकेट करना मुश्किल है। Regulation is moving more slowly than the technology due to the yes, exactly, due to high safety level needed in commercial aviation, extensive testing and certifications of pilot competency will be necessary। ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है भाई, रेगुलेशन मतलब लॉज वगैरह ही अगर उतने स्ट्रिक्ट है तो क्या मतलब, फिर क्यों, ये है ना। Stakeholders will need to be convinced in quality, safety and benefits of the use of AI। Stakeholders convinced नहीं होंगे because they will be more concerned कि यार कंपनी बचेगी कि नहीं बचेगी। वैसे current successful application, one Hungarian country has invested equivalent of over 2.5 billion, okay, in AI training systems for its military pilots. Feedback has been highly positive in terms of quality of training and cost reductions. Summary: this is an opportunity to reduce significant costs in the business. It is also an opportunity to gain significant competitive advantage. But, madam, being, but being the first commercial airline to introduce such a cutting edge technology। क्यों कॉस्ट कटिंग बोला मैं कुछ भी। मुझे बस देखना है कि इनके करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि अगर इनको $500 million का इन्वेस्ट करना है तो इनका करंट रेवेन्यू नहीं, करंट प्रॉफिट कितना हो रहा है। इनका करंट प्रॉफिट देखो ना, जस्ट अबव 500 million हो रहा है। तो ये लोग कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, इन लोग को कहीं ना कहीं से पैसा रेज करना पड़ेगा थ्रू डेट और इक्विटी। इफ रेज थ्रू डेट तो ऑब्वियसली इनको एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इक्विटी के टाइम पे इन लोग को शेयर होल्डिंग देनी पड़ेगी। And this shareholding, the shareholders will be skeptical for providing the shareholding or even the debt facility, ऐसा बोल देंगे। आरओसी जस्ट नहीं, आरओसी तो ठीक है यार, आरओसी के मुझे मुझे पता नहीं क्या बोलना चाहिए, वो ठीक है। हम्म, और मैं क्या बोल सकता हूँ इसके ऊपर, एक मिनट। प्रिंसिपल रिसीव क्या चाहिए। नहीं नहीं ठीक है, रहने दो। देखो सूटेबिलिटी ना, सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी। सबसे पहली बात तो फिजिबिलिटी मतलब पैसों की बात है, तो सारे रेवेन्यू प्रॉफिट्स की बात है वहां पर करेंगे। सूटेबिलिटी मतलब करंटली कंपनी को सूट करेगा कि नहीं करेगा, ये मॉडल एक्सेप्ट करना, इस बारे में बात करनी है। सो वी कैन सी दैट देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स, कुछ कुछ बेनिफिट्स हमें बता देंगे, लेकिन सूटेबिलिटी के तौर पे रेगुलेशन का कहाँ डाले, एक्सेप्टेबिलिटी में डाले कि इसमें डाले, सूटेबिलिटी में डाले। आई थिंक सूटेबिलिटी में पता नहीं सूटेबिलिटी में क्या आ जाएगा। एक्सेप्टेबिलिटी में मोस्टली ये गवर्नमेंट रेगुलेशन और स्टेक होल्डर्स के लोग कन्विंस नहीं होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी बंद होने का अगर डर होगा तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। और रेगुलेशंस अगर वो लॉज और यही नहीं है तो कैसे वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इतना इसमें, इसके अंदर।
कैपेबिलिटी का जो पॉइंट है ये इसके अंदर जाएगा, सूटेबिलिटी के अंदर, कि इट इज नॉट सूटेबल इन द करंट सिनेरियो, it's not suitable in the current scenario because the capability of replicating the decision making in all scenarios is still uncertain with the help of AI. Automatically training performance data. फिर ये जो इनका कॉस्ट है इनिशियल, वो भी कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं, है ना। लाइक अगर ये लोग, अभी मेरे को एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है यार, मुझे जेन्युइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है। इस सेकेंड, देखो अगर मैं, मेरे पास यहाँ पे 140 मिलियन है, बराबर है, और वहां पे 500 है। तो अगर मेरे को 140 मिलियन, ठीक है, मिलियन ना, इसको ऐसे ले लेता हूँ, 140 डिवाइड बाय 500 इंटू 280। तो देखो मेरा जो सालाना प्रपोज्ड एआई ट्रेनिंग में खर्चा होगा, वो होगा 78.4 मिलियन का। तो मेरा जो बचेगा, वो बचेगा जैसे कि मैंने बोला था कि 60 के जस्ट ऊपर और 65 के बीच में, तो मेरा बचेगा 61.6, मतलब चलो 62, मतलब मेरा हर साल 61.6 मिलियन बच रहा है। सो इन ऑर्डर टू जनरेट ब्रेक इवन ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, इट इज गोइंग टेक मोर देन 9 years, ठीक है। It is going to take more than 9 years. There can be certain scenarios where companies starts to market themselves with the form of AI training, that they provide AI training, because of which these costs, because of which the payback period might come down in the future. But still, it seems to be of a very high nature, and for these 9 years, company has to bear its investment, or bear the fact of effects of its investment, लिख हम दो, ऐसा 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 वो लिख देंगे। अह, मैं इस चीज में वही सोच रहा हूँ कि सूटेबिलिटी में आएगी कि फीजिबिलिटी में आएगी। Should undertake as soon as possible. Your answer should recommend with reasons whether it should undertake as soon as possible as suggested by the CEO. एज सुन एज पॉसिबल नहीं, अच्छा हाँ, सुटेबिलिटी में ये आ सकता है कि जो एक 100 कंट्री उसने इन्वेस्ट किया 2.5 बिलियन, इज मच मोर लार्जर, इज ऑलमोस्ट 5 times ऑफ व्हाट इज एक्चुअली, नहीं 5 times वाली नहीं, इज वे हायर देन व्हाट ये हमारी कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है। सो फॉर दैट रीजन हमारे पास अभी तक कोई प्रूफ नहीं है दैट एआई टेक्नोलॉजी विल बी अ सक्सेस ओनली, though the feedbacks are have been highly positive in the quality of training and cost reduction, but still there are no long term, कैसे बताऊं, लॉन्ग टर्म क्या बोल सकते हैं इसके अंदर, एविडेंस, लॉन्ग टर्म एविडेंस दैट एआई टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल, ये अपन बोल देंगे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, फिर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, टास्क 2 का बी पार्ट अभी करते हैं। सेकेंडली, Secondly, the CFO has received an email from the risk manager outlining the latest review of Corjetz principal risks. ठीक है. He has asked the CFO for his input into assessment of these risks before they are presented to the chair of the audit committee. The CFO has asked you for your assistance. Draft an email response which the CFO can send to the risk manager, which discusses the dynamic nature of Corjet's principal risks and assesses potential consequence of each of these risks for Corjet. हम्म, कॉन्सिक्वेंस तो बता देंगे, डायनामिक नेचर ऑफ दीज रिस्क। हम्म, प्रोफेशनल मार्क्स जो इवैल्यूएशन के लिए होंगे वो तो ठीक है, वो तो मिल जाएंगे मोस्टली, अगर कॉन्सिक्वेंस बराबर बता देंगे तो।
हम्म। CFO फ्रॉम रिस्क मैनेजर, डेट दिया हुआ है, ठीक है। सब्जेक्ट भी ठीक है। गुड डे। As you know, our principal risks continue to evolve in such a fast-moving industry. Therefore, we must continually adapt to risk response activities. In our latest review, the Risk and Assurance team has concluded that the level of risk associated with the following principal risk areas has increased. सबसे पहली बात तो external attack on or failure of critical technology. The increasing sophistication of organized crime groups means vulnerability regarding availability, confidentiality, and integrity of data. Corjetz increasingly relies on its critical technologies, which are key to develop to the which are key to the delivery of essential business processes. Causes क्या है? Cyber attack, hardware failures, the data center outage, use error. इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? बैड कंपनीज रेपुटेशन, लीक ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट्स विच विल लीड टू लीगल क्लेम्स फेस बाय द कंपनी, ये सब होंगे। नेचर क्या है इसका? नेचर है टेक्नोलॉजी रिलेटेड। दिस इज अ टेक्नोलॉजी फेलियर रिस्क, दैट मींस दे आर नॉट बीन, दिस फेलियर हैज अकर्ड ड्यू टू लैक this failure will be due to lack of security being shown or lack of security barriers being implemented by Corjetz। और क्या हो सकता है? ठीक है, इसके ऊपर बाद में अपन एक्सटेंड कर देंगे। सिग्निफिकेंट सेफ्टी सिक्योरिटी इवेंट, delivering a safe and secure service which meets the needs and expectations of our stakeholders is critical to our success. This includes ensuring the safety of customers and safe and staff both in the air and on the ground. Customer concerns and expectations continue to increase in this area. Flight safety incident, health and safety incident, airport security breach. एक मिनट ना। फ्लाइट सेफ्टी इंसिडेंट, ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी इंसिडेंट, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ब्रीच, तो इन सब से क्या हो सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर ये सारे ब्रीचेस हो गए तो? दिस वुड लीड टू द लाइसेंस फॉर वर्किंग बीइंग टेकन अवे, company's reputation going down, because of which it might also lead to eventual closing of the company, because security is one of the main things, main aspects that the company should focus on. The share prices would go down because of the same reason. सब बोल देंगे। It might also lead to if there are airport security breaches, then incidences of terror attacks taking place will increase. um, Health and safety incident तो ठीक ही है अभी, क्या इतना ठीक है। क्लाइमेट चेंज इन इको पॉलिसी रेगुलेशंस, वेदर पैटर्न, तो इससे क्या होगा? ये हमारे जो एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स है वो हम पे प्रेशर डालेंगे। Weather patterns, including storms and extreme temperatures, are increasingly difficult to predict and are becoming significantly disruptive for flight schedules and punctuality. Policies and regulations to tackle impacts of airline activities on climate change are increasingly affecting our business. Now, the nature of the business is environmental risk. ठीक है ना? This risk occurs due to the increase in CO2 emissions, right? Increasing CO2 emissions, increasing pollution. पता है मेरे को एक्चुअली इम्पैक्ट में क्या डालना है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। ये नहीं, डिस्कस द डायनामिक नेचर, मेरे को ये नेचर में समझ में आया कि मैं क्या डाला। अच्छा वो 6 मार्क का ही है, ओके ओके, एक मिनट, वो 6 मार्क्स का है। और जो पोटेंशियल पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज वो ज्यादा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं सबसे पहले पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज लिख दूंगा। और 6 मार्क के लिए थोड़ा सा ही लिख रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा ही 6 मार्क के लिए लिख दूंगा, एक एक दो दो लाइन, कि दिस नेचर इज ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क, और इसमें इसके ऊपर काम नहीं किया गया, नहीं इसके ऊपर काम नहीं किया गया तो क्या होगा वो तो नीचे बताना है। ये कंपनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कंपनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली
यही से पॉइंट्स थोड़े थोड़े कॉपी पेस्ट करूंगा। कंक्लूजन का जो पॉइंट है वो सबसे पहले लाइन से ही लिखूंगा। I am due to meet with the chair and the audit committee next week, and I would appreciate your input, particularly in relation to the dynamic nature of these risks and their consequences for Corjetz. This will assist in the audit committee's assessment of the adequacy of our mitigation responses to these risks. Hmm. Will assist in audit committee's assessment of the adequacy of our mitigation responses to these risks. ठीक है, तो अभी मैं इसको लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। देन लेट्स सी। टास्क टू बी अटेम्प्ट किया, अभी लास्ट बचता है टास्क 3। टास्क 3 में देखते क्या करना है। The board is about to review the results of the financial year ending 30th of June 2013. The CFO has asked you for your assistance before he presents the results to the board at its next board meeting. Okay. Financial 2013, ठीक है। VF was asked for your assistance before he presents the results to the board at his next meeting. He has provided you with Corjet's performance report and has asked you to assess the financial results, statistics and key performance indicators including table 1. I hope इसमें कैश के बारे में ना हो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर किसी 1 या 2 में कैश के बारे में कुछ तो लिखा था। केपीआईज, हाँ ठीक है, कैश के बारे में नहीं है, कैश के बारे में नहीं है। गुड गुड गुड। अच्छा, ये थोड़ा हम बड़ा कर सकते हैं इसको थोड़ा सा। जी हाँ, बड़ा करिए हमने। अच्छा, ये इतना ही है। ओके ओके ओके। प्रायोरिटीज मेजर्स, ठीक है, तो ये इनके केपीआईज है। जिसके बारे में करना क्या है एग्जैक्टली मेरे को इसमें, सॉरी। प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द सीईओ व्हिच असेसेस परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेक्ट इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर, एक्सप्लेन द पोटेंशियल रीजंस फॉर एंड implications of the results. You are not required to comment on the results of table 2 which is environmental and sustainability data. चलो ठीक है, एनवायरमेंटल से तो मन बच गए, दिस इज गुड थिंग। इतने के ऊपर ही अपने को कमेंट करना है, ठीक है। अंडर इन दिस रिपोर्ट, ठीक है, तो मेरे को रिपोर्ट के अंदर सब खाली फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर के बारे में बता देना है ना। सो वी कैन से, तो देखो सबसे पहली बात तो हम लोग ये बता देंगे कि हमारे रेवेन्यू बढ़ गया है, ठीक है। हमारा रेवेन्यू जो बढ़ा है दैट हैज इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंटेज, अपन सबसे पहले उनको वो बताएंगे। 5747 डिवाइड बाय 5308, तो हमारा बढ़ा है 8.27% से। ठीक है, ये रेवेन्यू हमारा 8.27 से बढ़ा है, लेकिन इफ वी सी हमारा कॉस्ट, वो हमारा बढ़ा है 9.8% से। तो वी हैव नॉट बीन एबल टू हैव कंट्रोल ऑन अवर कॉस्ट इन लाइन विद अवर रेवेन्यू, बिकॉज ऑफ विच देयर हैज बीन अ शॉर्ट। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट देयर विल श्योरली बी अ डिक्रीज इन द प्रॉफिट्स। हाउएवर, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग फ्यूल प्राइस, देखो जो फ्यूल प्राइसेस है ना वो बढ़ ही रहे थे, है ना। वो कहीं पर तो अपने को दिया भी था, इंडस्ट्री के इसमें ही दिया गया था। इंडस्ट्री बॉडी, ग्लोबल ट्रेड नहीं, caters and measures of the industry। है देखो, फ्यूल इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट ऑफ एयरलाइन, वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल। फ्यूल रिप्रेजेंट 20% ऑफ द एयरलाइंस, मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस कॉस्ट बीइंग एनुअली। तो हमारा जो 20% ऑफ द कॉस्ट है base annually, the price of jet fuel is strongly correlated to the international price of crude oil. तो ये high volatile fuel price costs are particularly prone to foreign exchange movements which are, तो ये सब रीजंस की वजह से फ्यूल कॉस्ट तो बढ़ी है, लेकिन इन्होंने क्या हुआ है कि फ्यूल कॉस्ट हमेशा 20% होता है। तो हम सबसे पहले वो चेक करें कि क्या ये 20% ही है कि नहीं। 4088 प्लस 1274, तो ये बनता है 5362, आई थिंक होगा 5362। तो 1274 डिवाइड बाय 5362 विच विल गिव अस 23%। तो दिस इज 23.7%, तो एक्चुअली दिस इज 3.7% मोर। मैंने इसको कैसे किया, बेसिकली 1274 डिवाइड बाय 4088 प्लस 1274, तो ऐसे करके। और यही चीज हमारी लास्ट ईयर पे कितने परसेंट पे थी वो भी हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो इधर से मैं कर लूंगा, 4785 बनता है शायद। तो 1063 डिवाइड बाय 4847, सॉरी 4785, which gives me 22%, so this has increased।
profits have decreased because of the, so though there has been an increase in the revenue, there has been an there has been a decrease in the profits because of the uncontrollable costs. This can be said that the fuel costs were not in the company's control because of the foreign exchange movements and all, but still certain good discount could have been possible. समरी स्टैटिस्टिक्स सब इसको आते हैं सीट्स फ्लोन मिलियंस। अच्छा, इसके अंदर my seats flown बढ़ गए हैं, passengers have also increased, which is a good thing. Number of routes operated has increased. Okay, revenue per passenger, it has actually fallen. So therefore it means that there was some price concession given to the passengers which were traveling through aircraft, through airplanes. But why was this price concession given? हमारे साथ कुछ खराब हुआ था? कुछ खराब नहीं हुआ था ना एक्चुअली, कुछ खराब नहीं हुआ था, बस प्राइस कंसेशंस दिए गए थे। पता नहीं, बस ये प्राइस दिस इज अ वेरी शॉर्ट फॉल इन द रेवेन्यू, एंड दिस इज वेरी शॉर्ट फॉल इन the terms of revenue per passenger. However, when it is multiplied by the number of millions of passengers who have traveled, this amount sums up to a huge amount. ऐसा अपन बोल सकते हैं। Total cost per passenger that has increased. So this cost per passenger might have increased because of the this cost per passenger might have increased in line with the fuel cost and the cost excluding the fuel which have been operated. ये ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारी चीजें ये हमारे इंडस्ट्री एवरेजेस देखो यहाँ पे बोली गई थी हमारे प्री सीन में ना। देयर आर सम इंडस्ट्री एवरेजेस गिवन टू अस। ये देखो ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजों के अपन कॉपी पेस्ट करेंगे और बताएंगे कि हमारा कैसे रहा है। अवेलेबल सीट किलोमीटर्स मिलियन, अवेलेबल सीट किलोमीटर्स ये बढ़िया, गुड थिंग। रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर दैट हैज रिमेन्ड द सेम, बिकॉज ऑब्वियसली रेवेन्यू पर पैसेंजर भी ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, तो इसलिए ए भी ऑलमोस्ट सेम ही है। लोड फैक्टर, चाहिए लोड फैक्टर क्या था मेरे को पता नहीं। लोड फैक्टर कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ चेक्ड इन पैसेंजर्स इन रिलेशन टू एन एयरक्राफ्ट अवेलेबल सीट, इट इज द मेजर ऑफ यूटिलाइजेशन। आई डोंट नो, लोड फैक्टर प्लस फॉलन, मुझे नहीं पता ये बेटर है कि ये खराब है। अच्छा, मुझे नहीं पता। हाउ सी हैज फॉलन, दिस फॉल माइट बी ड्यू टू व्हिच इज इन लाइन विद द फॉलन प्रॉफिट्स एज वेल। ये हो सकता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हैज डिक्रीज बाय अ स्मॉल परसेंटेज, हाउएवर केयरफुल कंसिडरेशन शुड बी गिवन वेदर दिस स्मॉल फॉल is just a pattern for decline or just another marginal or just a minuscule decrease in satisfaction. However, consideration should be given to the customer satisfaction because customers are the core aspects of the company because of which reputation is built. ये वो punctuality of the staff has decreased. एक्चुअली स्टाफ टर्नओवर डिक्रीज हुआ है लेकिन पंचुअलिटी भी डिक्रीज हो गई है। ये पता नहीं, ये थोड़ा वियर्ड चीज है। स्टाफ ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए पंचुअलिटी बढ़ाने के लिए। स्टाफ टर्नओवर हैज डिक्रीज बिकॉज ऑफ द सीईओ जो अच्छी आई है वो सब। CO2 पर पैसेंजर हैज आल्सो डिक्रीज्ड। CO2 per passenger has actually decreased. Okay, but if CO2 per passenger has decreased, then why was this a principal risk? Then that means the principal risk of climate change and eco policies regulations, wherein there was a consequence, when there was a cause mentioned as increase in CO2 emissions. This company does not have to be that feared about. That means companies achieving its objectives well of environment and is valuing the environment. However, careful analysis should be done that whether this fall in CO2 per passenger has been due to the increase in number of passengers or due to actually decrease in the CO2 emissions and carbon footprint made by the company. ये अपन बोल सकते हैं। इसके बारे में तो अपन को बात ही नहीं करनी ना, तो ठीक है। आई थिंक इतना मैं सबसे पहले मतलब वो लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, एंड इसके ऊपर और चीजें भी आ ही जाएंगी इवेंचुअली, है ना। तो सिर्फ बहुत कुछ लिखना है, बहुत सारी चीजें वो लिखनी है, तो इसके लिए आधा घंटा सफिशिएंट नहीं है एक्चुअली। भले ही ये 20 मार्क्स के लिए है, तो आधा